Okay, so IELTS speaking test tips. Now what we do is I have same PPTs for all four modules. Now though we will focus more on speaking and writing, but we will also simultaneously start covering, like listening and reading also. Yes, sir, please. Okay. So now, sorry. So reading. 1 minute. Learn how IELTS speaking is scored. Right. So वो there are four things they check and हर क्या चार चीजें चेक करते हैं ना वो एंड में इसमें आने वाला है. राइट. सो सोच देख लो कि वो क्या चेक करता है, कैसे कैसे चेक करता है. बिकॉज what's going to happen is if I know what they check, then I can do self analysis कि मैं कहाँ weak हूँ and start focusing more on the weaknesses. Right. So learn how pilot speaking is scored. And वो क्या चार चीजें चेक करते हैं, that's going to come at the end of this presentation. 1, 2. Second. Before the exam, practice and listen. Practice, listen, speak. Okay. Now इसमें भी again, now we have plenty of in fact what I do is मैं बहुत सारे तो मैंने आपको questions भेज दिए हैं शायद, but I have a long list of questions for all three and a list of possible answer also, and that is for first part. If you are not received that, I'll send you that. So इसका बहुत आसान तरीका है. Now another thing is, if you want to be a good public speaker also, then what we say is very simple. अभी earlier this facility was not there. Now it is there. सबके पास मोबाइल फोन है. Mobile phone, yes, sir. मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग होती है. Yes, sir. So pick any topic, speak on that, and record it. In fact, I keep telling you record and send it to me for my evaluation. Now it's very simple. You record it, and कोई दूसरा सुने कि नहीं सुने, आप सुनो उसको. First time you listen, you will find some mistakes you have done. Mistakes can be in terms of word choice. Mistakes can be in terms of grammar. Mistakes can be in terms of fluency. So I come to know the mistakes I've done. So if I have come to know through my own, like evaluation, the next time I'll try to do better. Yes, sir. And speaking का बड़ा simple सा फंडामेंटल मैं आपने बोला, आपने रिकॉर्ड किया, आप सुन रहे हो. अगर आपको भी पसंद नहीं आ रहा तो दूसरे को क्या पसंद आएगा? Yes, sir. Simple, right? So, and how to practice? Simply record. Record and re-listen every time. And plus, you don't have to worry about, like भाषा में word नहीं बदलते, word same ही होते हैं. थोड़ा सा पैटर्न बदलता है, मीनिंग बदल जाता है. सेंटेंस में एक वर्ड बदला, मीनिंग बदल गया. Yes, sir. So if you have good amount of vocabulary and you know the sentence structures, I only have to keep putting those words in proper places. वो practice बताती है, वो listening बताती है. उसके बिना होने वाला नहीं है. Okay, then. Yes, sir. Here. Know what you will be asked. Everyday ideas. Yeah, that's what I told you. वो भी आपको computer science, वो आपको कोई complicated topic आने वाले नहीं है. The requirement is very simple. In writing, जिस कोर्स में आप जा रहे हो, the topics will be, क्योंकि इसमें people go from different background. कोई इंजीनियर भी होता है इसके अंदर, कोई बीए भी होता है, कोई बीकॉम भी होता है, कोई एमबीए भी होता है. Yes, sir. So topics will be common navigable topic. This is the only topic of which a student coming to attend this course should have knowledge. अगर आप MBA के लिए जा रहे हो तो MBA के जनरल टॉपिक्स का आपको आइडिया होना चाहिए. Yes, sir. अगर आइडिया नहीं है तो वो एग्जामिनर की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी प्रॉब्लम. But there will be no complicated topics. It will be everyday idea. तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है. चिंता की बात ये है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, which unfortunately because Indians don't have habit of reading, तो उनका नॉलेज थोड़ा लिमिटेड होता है. Yes, sir. True. ये है. Then
Extend your answer. Now this is important. Time limited है. Time तो Yes. maximum time is what 13 to 14 minutes only, Yes, sir. and 3 parts. So no part can be more than 4 to 5 minutes. ये भी हमको Yes. पता है. मेरा मेरा ध्यान attention का होना, मेरा focus का होना चाहिए that the examiner should ask me as few questions as possible, Yes, sir. right? जितने कम क्वेश्चन पूछेगा मेरे लिए उतने आसान है. Mm-hmm. बर्तन अगर मैं छोटे छोटे आंसर दूंगा तो उसको तो वो 4-5 मिनट हर टॉपिक हर सेक्शन पे लेने ही है. Yes, sir. So you start asking more questions. Yes, sir. So two problems. Number one, if I give short answers, one, I should have to answer more questions. Two, the examiner will get the impression you are not able to give extended answers. Yes. You don't have full control over the language. Hmm. But extended का मतलब ये भी नहीं है कि 2 मिनट का एक ही आंसर बना दो. Mm-hmm. Like yesterday we saw that we have what is called बहुत सारे जो हमारे sentences हैं, close-ended sentences, answer is yes or no only. So you have been asked a close-ended question. Don't simply say yes or no. Now I can repeat the question, like that. Paraphrase करके. So जहाँ तक हो सके, don't give one word answer. Though the question one word answer में मेरा answer खत्म हो जाता है. Still get into some explanation. One, you will impress the examiner. Two, you will have to answer less number of questions. So extend your answer. And कई बार ये possible भी नहीं होता. Now what is your name? आप इसको क्या extend करोगे? अपना नाम ही बताओगे. But where do you stay? May I can say I stay in let's say Gandhidham. Here I can add 1 or 2 sentences. No. Yes, sir. What is your qualification? अब इसमें क्या extend करोगे? So many times it's not possible, but if it is possible, add 1 or 2 sentences. Yeah. Sometimes give short answers too. Possible ही नहीं है. What's your name? So उसमें आप क्या extend करोगे? And कई बार, many times, many जो short answer है, they actually add impact to the question. Right? ये question के ऊपर डिपेंड करता है. Now here, now ये इसको पढ़िए. Okay, sir. What does it say? Give yourself time to think. Repeat, reformulate the question. Now, ये interviews में भी होता है. Many times people think जैसे ही examiner ने बोलना बंद किया, मुझे तुरंत बोलना स्टार्ट करना है. ऐसी कोई रिक्वायरमेंट. You can take couple of seconds because I have to basically understand what the question is and make the answer. So I need some time for that. Yes, sir. So you can certainly definitely take couple of seconds. Couple of seconds means 3 to 5, 6, 7 seconds, but not 1 minute. इसका एक तरीका है, माइंड तो सोचता रहता है, एंड मुझे ये भी नहीं बताना कि मैं तो सोच रहा हूँ. So what you can do is reformulate the question. उसने क्वेश्चन पूछा, reformulate मतलब did you ask me this or is this what you wanted to know? So what I'm doing is I'm simply reformulating the question, but mind at the same time is thinking about answer of that question. Yes, sir. So this can be used when you want to make answer for the question, or it's good you have consumed couple of seconds in only reformulating the question. तो उतना टाइम आपने यूज कर लिया क्योंकि वो टाइम तो मैक्सिमम 14 मिनट के आसपास ही होता है. उसके बाद तो वो जा ही नहीं सकते. Yes, sir. Yeah, then correct yourself. You can do it immediately. Yeah. No, please don't think कि आपको सही ही बोलना है. Your answer mistake क्या होती है? Normally grammar में होती है. जो आपने पॉइंट लिखा है उसको एलाबोरेट करना चाहते हो, दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहते हो, कर सकती हो. But the difference between writing and speaking, just is writing में आप correction बाद में भी कर सकते हो, यहाँ बाद में नहीं कर सकते.
Yes, sir. Once you have given an answer, all the correction you have to do has to be done before the next question. Yes, sir. Okay, you can very well say, sorry, I want to correct myself, and this is what I really meant. ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, sir. बट 3 क्वेश्चन बाद में मत बोलो, उस क्वेश्चन का आंसर मेरे को ये देना. That's not acceptable. Corrections, yes. You can basically say, oh, sorry, I think I have, I want to modify my answer. So this is actually what I wanted to say. So here is what I wanted to say. कर सकते हो, Yes, but sir. do this before the next question. If you don't understand the question, ask. ये और एक बहुत से लोगों को मिस्टेक है, समझ तो आया नहीं है क्वेश्चन, so they think we cannot ask the interviewer. No, you can ask. Sorry, I have not understood what to say. Can you explain? Now see, not understanding है ना, बहुत सारे रीजन होते हैं. एक होता है Yes, मेरा sir. ध्यान भटक गया, मैंने सुना नहीं. दूसरा ध्यान तो था, समझा नहीं मैंने वो क्या कह रहा है. So Yes, sir. whichever, if you are not understood, tell him I have not understood. So in that case, then most probably rephrase the question. समझ नहीं आया तो Yes. क्या समझना, लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई ना वो तो. Yes, So sir. they will rephrase the question and then you can answer. But you can do it once or twice, but you cannot simply keep repeating this. Sorry, I have not understood. Sorry, I have not understood. आप पूरे टेस्ट में Yes, दो तीन बार कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. है ना, होगा कहाँ? वो बेसिकली जब आपका सेकंड पार्ट में जब थोड़ी डिस्कशन होती है, थर्ड पार्ट में होगा. फर्स्ट पार्ट में तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज सारे क्वेश्चन तो आपके बारे में ही है. Yes, sir. Right? So if you don't understand, don't hesitate to ask. Say you are not understood. और कई बार कल सुना नहीं, then if you say you are not heard, if you say you are not heard, उसने जो बोला था उसको रिपीट कर देगा वो. Okay. समझ में नहीं आया तो say no, sorry, I have not understood you. तो understood मतलब then you rephrase the question. If you say I have not heard, तो जो बोला था उसको ऐसे कैसे रिपीट कर देगा. Okay, sir. So also give reason why you are, raising this doubt. Whether your mind started wondering, you did not hear, or you are not able to understand, though you have heard. Learn to use a range of functional vocabulary. So your lexical resource, ये तो check करते ही है. Right? Now here again, we are not saying use street language. Language should be right language, but Yes, it sir. need not be academic language of the kind you are supposed to write in the essay. Yes, sir. Okay? So, and don't keep repeating the same word again and again, unless it is absolutely essential. So, vocabulary जान लो. Yes, sir. Prepare extensively for part 2. That's your cue card. Cue card, Yes, sir. there are two parts. One part is there is a cue card. Give you 1 minute to prepare, and then you have to speak. Then Yes, on sir. that there are some follow-up questions. Yes, sir. Right? Oh, part 3 is different. Part 3 can be connected to part 2, or it can be independent also. But cue card के 2-4 follow-up questions होते हैं. Now what I'll do is I'll give you cue card, and then also give you possible follow-up questions on cue card. वो है मेरे पास. Okay. So prepare extensively for part 2. Part 2 में क्या आ जाएगा मेरे को पता नहीं है. Part 3 में तो फिर भी चलो एक टॉपिक उन्होंने चुन लिया, मेरे को थोड़ा बहुत उसका आइडिया आ जाता है. So part 2 cue card. Plus another thing, very important thing in part 2 is, अगर उसने आपको दिया है 3 points या 4 point, you have to cover all 3 or 4 points. Yes, sir. ये नहीं है 4 point दिए आपने 2 का जवाब दे दिया, टाइम खत्म हो गया. No, not that. You have to prepare yourself to answer all the parts of cue card. 3 है तो तीनों का जवाब देना है, 4 है तो चारों का जवाब देना है. Yes, sir. 4 है तो आपका क्या होगा, आंसर छोटे हो जाएंगे for each part. Yes, sir. That's important. Don't leave any part unanswered.
prepare extensively for part 2. I'll give you few cards and then uske follow up question. Yes, sir. And ये Listen to the grammar in the question. Yes, sir. Yeah. ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है. ग्रामर में क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, आंसर आ रहा है कॉन्टिन्यूअस टेंस. Yes, sir. क्वेश्चन पूछा गया है परफेक्ट टेंस में, आंसर आ रहा है सिंपल टेंस. Mm-hmm. When you change the grammar of the question, the answer change हो जाता है. Yes, sir. सिंपल टेंस का आंसर कॉन्टिन्यूअस में दे तो मीनिंग टोटली बदल गया. Yes, sir. So very clear. Understand the grammar. वो जो ग्रामर है पहले प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर की है, वो हेल्पिंग वर्ड बता देता है. Yes, sir. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, ये ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब बता देते. These are do, does, present tense, has, have, present Yes, tense. sir. राइट. तो मेरा आंसर भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए. उसकी आगे वाला वर्ड बता देता है सिंपल टेंस है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस. But normally they will not get into perfect continuous sentences. Mostly it will be simple and continuous, simple and continuous, and perfect. Perfect continuous normally they will not do. And वो भी ज़्यादातर present and past. ज़्यादातर present and past. So present simple, present continuous, present perfect, past simple, past perfect, past. फ्यूचर के ज्यादा नहीं होते, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो नॉर्मली होता ही नहीं. Yes, sir. तो जिस ग्रामर में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर भी उसी ग्रामर में होना चाहिए. अदरवाइज आपका जो मीनिंग है सेंटेंस का वो बिल्कुल बदल जाता है. Yes, sir. देन Don't worry too much about using clever language. Think fluency. वो था ना वहाँ, देन डोंट से Right. बारी Don't बारी use- वर्ड यूज मत करो. Yes, sir. They will confuse you and they'll stop your this thing speaking. Here they are checking the focus on fluency, not in the kind of language. And nobody, when speaking, nobody uses difficult words. Everybody uses common everyday words. In fact, speaking का और एक requirement है. Of course, we don't say use that in IELTS. We say assume आप जिससे बात कर रहे हो that fellow is idiot. Yes, sir. So use a language which an idiot can understand. But of course वो उसका level देख के उसको उस level का idiot मानो. But not in IELTS speaking. Here the requirement is something different. Okay. So don't worry too much about using clever language. Don't use it. Be fluent. Don't be afraid to repeat yourself. Think coercive. The has I was saying trick. Now इसमें क्या है? Many times मैंने कुछ तो बोल दिया, अब आगे कुछ बोलना है, but mind में idea नहीं आ रहा. I'm stuck for words. चुप ही नहीं हो सकते. So यहाँ एक बहुत अच्छा सा trick है. Repeat yourself. तो मैंने एक sentence बोला. Second sentence में I can say as I was saying and repeat that first sentence itself. So you get time, mind gets time to think. Plus आपने थोड़ा सा 2-4 सेकंड यूज कर लिए. So if you are running out of answer, you need some time to think. So this trick can be used. That is repeating yourself. As I was saying, as I said before, as I have mentioned, use anything. So use this trick, especially when you are running out of ideas. Mind में idea तो है but शब्द नहीं आ रहे हैं, उसके लिए use करिए. Then Speak about what you know and what you think. so impress करने के लिए इधर-उधर मत जाओ. What we say is very simple. Know what your limits are and stay within your limits.
Yes, sir. उसके बाहर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. Yes, sir. Whether it is writing or whether it is speaking, know your limits, stay within that. Yes, sir. Don't try to be, don't try to impress others by something which I don't have. Problem create करेगा. So अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का ट्रिक नहीं है, then use simple sentence, use compound sentence. Don't get into making long and complex sentence. प्रॉब्लम करेगा. अपने हद के अंदर ही रहो. Give example. Yeah. I made a point. आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, लंबा कैसे करोगे आप? वो था ना, how to develop a paragraph, 4 E's. Yes, sir. So make use of those. Yes, sir. Explanation, example, evidence, extra detail to make your answer long. Yes, sir. Right? So give examples. Think about details. That's interesting and good for your vocabulary. Yeah, basically, these things one must do before. कि थोड़ा अपना कुछ भी आइडिया ले लो. ये है, when we talk of that 15 ideas, take any idea. This is a preparation time. Take an idea and try to expand it as much as possible. Yes, sir. जितना हो सके खींचो उसको. So उसमें क्या होगा? Now वैसे भी suppose एक टॉपिक मैंने ले लिया and when I'm practicing मैंने उसके 6 सेंटेंस बना दिए. Yes, sir. एक्चुअल टेस्ट में अगर वो आ भी गया, वो 6 सेंटेंस मेरे माइंड में आने वाले नहीं है. 6 मैंने बनाए थे तो उसमें 3 तो गायब हो जाएंगे, 3 तो रह जाएंगे मेरे माइंड में. बट अगर 3 ही बनाए थे प्रैक्टिस में तो 2 गायब हो जाएंगे. Yes, sir. So you have problem. And Make eye contact. एक आई इसका one reason is when who doesn't make eye contact? What, sir? किस टाइप का आदमी आई कांटेक्ट नहीं बनाता? जो confident नहीं हो. That's it. Now if you are not confident, if you are avoiding eye contact, and if you are avoiding eye contact means you will automatically start losing your confidence. Yes, sir. We say, one thing I have to already bata dena, it is what you feel inside is reflected outside. So what you're feeling inside, आपकी body corresponding, let's say posture ले लेती है अपने आप ही. So if somebody is feeling confident inside, body automatically confidence वाला posture ले लेती है अपने आप ही. So the way you're feeling inside is reflected outside, and reverse is also true. That is, if you're keeping yourself in posture of a not confident person, after some time you will automatically start feeling less and less confident. Yes, sir. And ये body language का एक, let's say, inherent quality है that people who avoid eye contact are not confident, and if you avoid eye contact you start losing your confidence. तो इसका असर तो आपकी परफॉर्मेंस पर आने वाला है. Now you are losing confidence, तो आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा. You may have all the answers, but still now you are going to find it more and more difficult to continue to speak. Eye contact. Plus, I think also they offer a handshake when you go for a test. They also offer handshake. Yeah. उसका भी बहुत जरूरी है. Give a firm handshake. We have Yes, one chapter on body language. आधे पौने घंटे का. And that itself वो हमारा right वो पूरे टेस्ट में भी काम आता है and speaking में भी काम आता है. Yes, sir. Okay. Then Immediately before the exam, speak English. right, so we said आप
10-15 मिनट पहले पहुंचो एंड महात्मा बुद्ध बन के मत बैठे रहो. Mm. Speak to people, right? Make some, Yes, sir. small talk, do some chit chatting. Take one care. This small talk, this chit chatting has to be only and only in English. सामने वाला अगर हिंदी गुजराती बोलता है, still I'll speak in only in English, Yes, sir. right? तो थोड़ा आपका वो mental frame बदल जाएगा. You will be more comfortable and you have to actually speak. नहीं तो वो everything starts afresh. तो आपने क्या किया? इसको ना warming up exercise तो आपने बाहर कर दिए. So these are warming up exercises. So don't simply keep quiet. Speak to somebody. और लोग भी होते हैं ना वहाँ, वेट करते हैं. Mm-hmm. Yeah. And then this. Do not relax too much. It's not a conversation. Conversation, yes, sir. ये आपकी दोस्त से बातचीत नहीं हो रही है. नहीं हो रही है. एग्जाम हो रहा है. An exam. And वैसे भी if you sit relaxed, इसका असर होता है. Your energy drains out. इसलिए what I told you, sit relaxed. चाहे वो आपका written exam हो या speaking हो, sit relaxed. Arms in front. तो इससे ये बनता है, एनर्जी रहती है एंड आदमी कॉन्फिडेंट फील होता है. एंड वैसे भी एग्जाम है एंड ऑल दीज थिंग्स ऑटोमेटिकली हाउ कॉन्फिडेंट इज योर वॉइस एंड ऑल दैट दे डू हैव इफेक्ट ऑन द एग्जाम. हालांकि दे आर ट्रेन्ड टू इग्नोर ऑल दीज थिंग्स बट थोड़ा असर तो होता ही है. Yes, sir. राइट. सो डोंट रिलैक्स टू मच. यानी कुर्सी के ऊपर वो सिटिंग ऑन द एज एंड आपका बैक जो है वो सीट के ऊपर है तो थोड़ा प्लस ये अच्छा नहीं लगता. ये अच्छा नहीं लगता एंड यू लूज एनर्जी. So these are 20 do's of speaking test and those who attend don'ts of speaking test. Yes, sir. Right. So take care. है कॉमन चीजें हैं but then मैटर करते हैं. everything put together has lot of impact and Yes, sir. ये है. Mm-hmm. So that is